Hello students, today's topic is one person company. So one person company, as the name suggests, that one person who is the shareholder of the company. So in this type of company there is only one person. So we will discuss its advantages and disadvantages also in this lesson. But before starting this, I would like to tell you a brief detail of one person company, and then we will start with the advantages and disadvantages of the company, one person company. So first of all, let's see why it has come into existence. So there was a sole proprietor. We know that in sole proprietorship form of business organization, there is a single person who is the owner of the company. So sole proprietor, who is the owner of the company, he can't take loan from outside, और अगर देखा जाए तो वो गुड्स भी है वो क्रेडिट पे बाहर से नहीं ले सकता. तो इन फैसिलिटीज़ को और कुछ और फैसिलिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि उसके पास कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है, कैपिटल कम होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं. सो मेनी लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़. सो सोल प्रोप्राइटरशिप, बिकॉज ऑफ इट्स लिमिटेशंस, so a sole proprietorship has unorganized form of business organization. If we talk about unorganized form of business organization, what is the meaning of unorganized? Unorganized means कि कुछ भी ऐसा नहीं था, फैसिलिटीज़ नहीं थी, और अगर हम ये देखें कि पब्लिक का फेथ अगर इस पर्सन में है तो वो नहीं था, बिकॉज जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो अपने अकाउंट्स को पब्लिश नहीं करता. सो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में अकाउंट्स पब्लिश नहीं किए जाते. सो नॉर्मल जो पब्लिक फेथ था, नॉर्मल लोगों का फेथ इस टाइप ऑफ बिजनेस में नहीं था. तो उसने जब सोचा कि अगर मेरे पास लोगों का फेथ नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए, देन उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक पर्सन को और अपने साथ अटैच कर लूँ, एंड देन वी विल स्टार्ट अ प्राइवेट कंपनी. सो उसने अपने वाइफ को अपने साथ अटैच कर लिया. सो वाइफ को वो सिर्फ शो करने के लिए उसने अपने साथ अटैच कर लिया. देन उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर ली. सो हम ये जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड. सो मिनिमम 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी. तो उसने अपनी वाइफ को साथ में इंक्लूड कर लिया बिजनेस में. तो बेसिकली सब कुछ जो था वो एक सोल प्रोप्राइटर ही कर रहा था, बट जस्ट टू टेक द एडवांटेज ऑफ द प्राइवेट कंपनी ही डिड इट. सो उसके बाद या फिर उसने एक तो कुछ लोगों ने अपनी वाइफ को अटैच किया, या फिर कुछ लोग ऐसा भी करते थे कि एक और पार्टनर को अपने साथ अटैच कर लेते थे, एक और मेंबर को, और उसको मिनिमम पार्टनरशिप के साथ अटैच कर लेते थे. दैट मीन्स कि जो उनके पास शेयर्स थे वो मिनिमम होते थे और मैक्सिमम जो शेयर्स थे वो एक सोल प्रोप्राइटर होल्ड कर लेता था. दैट मीन्स इस केस में अब ये सोल प्रोप्राइटर नहीं है, इस केस में इन्होंने एक कंपनी बना ली है, प्राइवेट कंपनी. तो ये पर्सन जो एक सोल प्रोप्राइटर था, इसके पास इसने एक और पर्सन को अपने साथ टाई अप कर लिया. तो वो पर्सन के पास अब मिनिमम पार्टनरशिप है. मिनिमम पार्टनरशिप मतलब कि इस पर्सन के साथ पास अब कुछ लिमिटेड शेयर्स ही हैं जो इसने इस पर्सन को दिए हुए हैं, और जो मैक्सिमम जितनी भी इन्वेस्टमेंट है सोल प्रोप्राइटर अपने पास रखता था. तो इन सारे डिसएडवांटेजेस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं सामने आई, उसकी वजह से कंपनीज बिल एक पास हुआ लोकसभा में 2012 में, जिसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 में एक 1 पर्सन कंपनी होल्ड में आई, सो दैट जो ये सारी चीज़ें हैं इनको हम रिमूव कर सकें और एक सिंगल पर्सन भी एक कंपनी का एडवांटेज ले सके. सो वी हैव एडवांटेज ऑफ 1 पर्सन कंपनी इन कंपनीज एक्ट 2013. फीचर्स ऑफ 1 पर्सन कंपनी. So one person company has one person as its members,
So one person company, the first feature is one person, and it has the status of private company because it is just like a private company. So next is appointment of nominee. In case of death or inability of the main person, that is who is running the company, that is one person, in case of death and inability of the person, one person is required as the nominee of that person. In case of death or any inability, the appointment is done and that nominee will run the business in uncertainty. किसी भी केस में अगर वन पर्सन जो कंपनी एक वन पर्सन कंपनी रन कर रहा है उसकी डेथ हो जाती है, इनएबिलिटी हो जाती है, तो उस केस में उसका नॉमिनी है वो उसको कंटिन्यू कंपनी को करेगा. नेक्स्ट वी हैव जॉइंट होल्डर. वन पर्सन कंपनी में हम एक और पर्सन को भी अपने साथ ऐड कर सकते हैं. तो हमारे पास 2 मेंबर्स हो गए अब जो वन पर्सन कंपनी को रन कर रहे हैं, बट दे विल होल्ड लाइक जस्ट अ जॉइंट होल्डर. So they will be treated as one person. So joint holder means 2 persons can be there in one person company, but they will be treated like a person, like one person. So next is limited liability. The liability of the member is limited. The liability of the member is limited up to the capital invested in the company. In case of loss, his liability is also limited. Next we have special words with the name. When we write the name of the one person company, we write in brackets as one person company. Suppose we are writing the name here and in brackets we will write one person company, so it can be identified that it is a one person company. So these are the special words we write while writing the name of the company. So number of directors. Number of directors, as we know that the shareholder is 1. So number of directors can be minimum 1, but up to 15 members can be there in one person company. Next is meeting of director. Meeting of director is necessary twice in a year. So there should be a gap between the between 2 meetings of 90 days. So 90 days gap is needed in 2 meetings. Annual general meeting is the meeting that is held in the at the annual basis. So we can say that annual general meeting is not necessary. So one person company is exempted from annual general meeting. Next we have perpetual succession. Perpetual succession means in case of the death of the person, main person, the nominee is there. हमारे पास nominee है, तो अगर उस पर्सन की मेन पर्सन की डेथ भी हो जाती है तो उस केस में भी वन पर्सन कंपनी बंद नहीं होगी, उसका नॉमिनी उसको चलाएगा. सो परपेचुअल सक्सेशन इज देयर. मेंबर्स परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कि मेंबर्स हमारे पास होते एक डिफरेंट हैं और कंपनी डिफरेंट है, तो कंपनी कंटिन्यू चलती रहेगी. देन सेपरेट लीगल एंटिटी. हमारे पास मेंबर्स डिफरेंट हैं, कंपनी डिफरेंट है, तो कंपनी अपने नाम से कुछ असेट्स भी परचेज कर सकती है और किसी पे केस भी कर सकती है. सो वन पर्सन कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ वन पर्सन कंपनी. Moving towards the advantages of one person company, let's see first advantage. So first advantage is limited liability. So as we discussed, one person is there and he invests money in the business, so in his company, so his liability is limited. In case of loss, his liability is also limited. But in case of partnership, if we see, the liability of the partners are unlimited. So it is an advantage over here. In one person company, the member has limited liability. Next we have alternate of sole proprietor. So in case of sole proprietor, one person is there
And if we talk about one person company, one person is there, but one person company is treated, its status is just like private company. So it works as a private company, so it can take the advantage of private company. So one person company is a private company, is treated like a private company and take the advantage of private company. So when we talk about alternate of sole proprietorship, so it is the best alternate of sole proprietorship. In case of sole proprietor, the liability of the sole proprietor is unlimited. अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बात करते हैं तो उस केस में सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बिकॉज इन केस ऑफ लॉस हिज पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज्ड फॉर टू रीपे द डेट. बट इन केस ऑफ this one person company, it is the alternate of sole proprietor. The person is one here also the shareholder is one, the member is one, but the liability is limited. So this is an advantage. Next is one shareholder, sole shareholder. There is one person in the one person company, so single shareholder is there, all the shares are with him, so he is the sole shareholder. So he is the sole shareholder, that's why he is the sole director. In certain cases, shareholders and directors, they can be, both can be the same. So as one member is there, एक ही मेंबर होता है, सभी के सभी शेयर्स उसके पास होते हैं, तो उस केस में वन ही डायरेक्टर होता है, he himself be the director as well as the shareholder of the one person company. Next is more logical. If we talk about sole proprietor, तो ये अगर कुछ ऐसे केसेस यूज करता है कि अपने वाइफ को लिया और फिर पार्टनर को लिया एक मिनिमम पार्टनरशिप देके, अगर हम उन केसेस की बात करें तो वो इलॉजिकल लगता है हमें. बट अगर हम वन पर्सन कंपनी की बात करें कि एक ही पर्सन है बट यहाँ वो एडवांटेज ले रहा है एक प्राइवेट कंपनी का, तो ये मोर लॉजिकल है. नेक्स्ट इज एंट्री इन एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. नाउ from sole proprietorship, from the unorganized sector, the business is now converted into one person company. तो अगर हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर उसे सपोज किया जाता था, पब्लिक का फेथ नहीं था, नाउ इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू वन पर्सन कंपनी. तो उस केस में ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इसकी एंट्री हो गई है, उसको उसके ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एंटर माना जाएगा. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द one person company. So first advantage is limited liability, then it is the alternate of sole proprietor, sole shareholder is there, sole director is there, more logical, and entry in an organized sector. Next is disadvantages of one person company. The first is more formalities. As compared to sole proprietorship, more formalities are needed in forming the one person company. So its registration is very much required. After that you will get the incorporation certificate of incorporation, then you can start the company. So as compared to sole proprietorship, this is very much difficult to start a one person company. Next is shortage of resources. As one person is there and he is investing in the business, in the company, so we can say there is a shortage of resources. Unbalanced decision. So this can be compared with the public company. As compared to public company, there are shortage of resources. Next is unbalanced decisions. So one person is there, all the decisions are taken by that one person, and the one person who is the shareholder, who is the director, and who is the single owner of the company, then we can say that unbalanced decisions are there. So these are the disadvantages of one person company. Formation of company. So let's see how the one person company is formed.
First of all, giving separate name, we give the company a name. After the name of the company, we have decided it is written that this is one person company. In brackets, it is written that this is one person company. So here one person company is written. Next step is appointment of nominee. We know that one person is there in one person company, so we appoint nominee. तो जो भी नॉमिनी होता है उसका नेम हम रजिस्ट्रार को बताते हैं. देन नॉमिनी give the signature to the registrar, and then in memorandum of association his name is written with the his consent, and then memorandum of association and article of association is given to the registrar after the appointment of the nominee. Then bearing OPC with the name is written, and after that OPC, that means one person company, is written after the name of the company. So registrar writes the name of the company, and then he writes in brackets one person company. So the company bearing OPC with the name, that means after the name OPC, that means one person company, is the name that is given to the one person company. Next is depositing documents. What are the documents? Memorandum of association, article of association. These are the documents that we have to submit, and the written consent of the nominee. These are the documents that we have to deposit with the registrar. Then after depositing the documents, then we will get the certificate of incorporation from the registrar, and after receiving the certificate of incorporation, this means that the company has now been incorporated and we can start our business. So after receiving the certificate of incorporation, the one person company can start its business. So this is how the formation of one person company is done.